Good morning, students. We were doing lesson 7, Evans Tries O-Level by Colin Dexter. If we look at the complete name of the writer, Norman Colin Dexter. So we have already completed 2 or 3 pages so far as line by line explanation of this particular chapter is concerned. Now look at the next, that is, we have to look at page number. I think we had done up to this page. Now we will have to start with page 72 if I am not wrong. Let us start. Keep your pens or pencils, and if you consider any word difficult, it is your moral responsibility to note it down. Let us start. Evans the break, as the prison officers called him. An introductory part, dear students, I have already told you people that that fellow was titled as Evans the Break because he had broken the prison and ran out of that many times. So that is why he was titled as Evans the Break, as the prison officers called him. So prison officers of Oxford prison used to call him Evans the Break. I think this concept is crystal clear. इवेंस द ब्रेक क्यों उसको बोला जाता था? क्योंकि वो काफी बार जेल को तोड़ के भागा हुआ था और उसको नाम के साथ इसीलिए द ब्रेक जो था वो ऐड ऑन कर दिया गया था और प्रिजन ऑफिसर्स उसको इस नाम से बुलाते थे. Thrice he had escaped from the prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. Just look at line by line explanation of this particular sentence. So, dear students, thrice means 3 times. He had escaped from prison. He had broken the doors of prison 3 times and had run out of prison. तो जेल को तोड़ के already informed you people that 3 बार भागा था. But for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he would now be disgracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. Now it's a little bit tough, but try to understand the meaning of it. But for the recent wave of unrest, here means he had interrupted the things everywhere. But for the recent wave of unrest, he had created unrest everywhere. In the maximum security establishments up north. Wherever he was in prison, he was given very tight security. Everywhere the things were very secure. Still, he was expert to break the jail, to break the prison. So I think you are crystal clear up to this particular point. But for the recent wave of unrest, in the maximum security establishment up north, he wouldn't be now be disgracing the governor's premises. So if we look at this word gracing, this is used for positive sense. But here it is irony. I think you are crystal clear about the poetic device, literary device, irony. It is opposite to what we say. तो यहाँ इसको समझिए बेटे. अब वो यानी कि गवर्नर के प्रेमिसेस को ऑनर कर रहा था, ग्रेस कर रहा था, यानी कि कभी भी जो प्रिजनर होता है प्रिजन को कभी भी ग्रेस नहीं करता.
जो grace word already I have told you is used for positivity. यहाँ पे इसको नेगेटिव सेंस में एक तानाकशी होती है ना, आयरोनी जिसको बोला जाता है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस लिटरेरी डिवाइस. तो यहाँ पे कहते हैं कि अब वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन की प्रेमिसेस को क्या कर रहा था, he was in that particular jail. This particular point highlights this. And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. So the governor of that particular jail was very vigilant. He never wanted to take any chance with this particular personality because his reputation was not up to mark. And the governor was going to make absolutely certain. And this time governor was trying his best to do the best to make the things in positive order. Here if we look at this particular sentence in simple words, तो यहाँ पे गवर्नर ने पूरी तैयारियां कर ली थी ताकि कोई चांस ना ले सके ये भागने का, ताकि वो उनकी डिसग्रेस ना करके जाए. डिसग्रेस होता है जब नेगेटिविटी होता है. ग्रेस का जो इफ वी लुक एट द पॉजिटिव ऑफ ग्रेस वर्ड, डिसग्रेस, ग्रेसिंग, डिसग्रेसिंग. तो यहाँ पे डिसग्रेसिंग किस लिए बेटे यूज किया गया है? ये यूज किया गया है इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए कि अगर कोई प्रिजनर जेल को ब्रेक करके, जेल को तोड़ के, प्रिजन को तोड़ के छुप के भागता है तो अथॉरिटीज की इंसल्ट होती है. जो कंट्रोलर्स होते हैं, जो जेल को बेसिकली द गवर्नर वाज हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर जेल, टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिजन, ऑटोमेटिकली वाज डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ दैट फेलो. तो उसने इसीलिए प्रॉपर वे से तैयारियां कर ली थी कि इस टाइम पे कोई ऐसी नेगेटिविटी वो क्रिएट ना करे, कोई ऐसा चांस ना ले. तो नोट द इवेंट्स was a great burden, just a persistent nagging. Just look at this particular word. Absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. So I think Warner had done everything to look at the things in positive order. Not that events was a real burden. Now just look at this particular sentence. Not that events was a real burden. यानी ऐसा नहीं था कि events एक बहुत बड़ी burden था. Just a persistent nagging presence. So just look at this particular word. Nagging word means problem, परेशानी. So now just look at the next word. If we look at the next word here, you will have to look at not that events was a real burden, just a persistent nagging presence. तो ये burden नहीं था, persistent होता है in continuity. तो एक तरह से वो सिरदर्दी था, उसकी प्रेजेंस जो थी जेल के लिए बहुत बड़ी हेडिक बन चुकी थी, क्योंकि हर एक को डर था. बेसिकली गवर्नर जो टॉप मोस्ट पोस्ट थी वहां पे, उनको डर था कि कहीं ये हमारी इंसल्ट करके भाग ना जाए. इसके रिकॉर्ड्स जो थे बहुत खराब थे. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर सो फार एज दिस लाइन इज कंसर्न. There is no doubt in that. Persistent means in continuity. Nagging is परेशानी और problem. So presence होता है when the person is present anywhere. यानी जेल में जो वहां पे वो था प्रिजन में, वो जेल अथॉरिटीज के लिए बहुत बड़ी बर्डन थी. तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर सो फार एज दिस particular sentence is concerned. यानी कि इवेंट्स इतनी बर्डन नहीं था जितनी कि उसकी प्रेजेंस बर्डन थी, कि वो वहां आने के बाद जो वहां पे अरेंजमेंट्स करने पड़े थे, फिर भी डर था कि कहीं नेगेटिविटी क्रिएट ना कर दे. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see to it personally. Just look at very fine sentence. He would be all right in Oxford. Look at the explanation of these words, these few words.
तो he would be okay in that particular prison. यहाँ इसका मतलब है कि कोई चांस नहीं था उसका कि वो जो करना चाहता था वो कर पाए। तो ऑल राइट का मतलब यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक रहने के चांसेस थे, उसके ठीक रहने का मतलब कोई चांस नहीं था कि जो उसकी हरकत थी जेल तोड़ने की वहां पे रिपीट कर पाए। जो जो जेल तोड़ के भागने की उसकी हरकत थी उसको कंटिन्यूटी में कर पाए, ऐसा कोई चांस नहीं था। Though the governor would see to it personally, because the governor, the topmost authority or the topmost post of that particular prison, was taking care of that particular point personally. Now, try to understand this particular point in a more fine way. So if we look at, तो वहां पे वो बिल्कुल ठीक रहने के चांसेस थे, कोई चांस नहीं था कि वो नेगेटिविटी क्रिएट करे। तो क्योंकि गवर्नर वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट फेलो पर्सनली, गवर्नर खुद ध्यान रख रहा था उस पॉइंट का। ही वाज विजिलेंट टू लुक एट every action of that particular prisoner. I think crystal clear. And besides, there was just possibility that Evans was genuinely, if we look at this particular word, besides, so prepositions. Besides means by, beside means, and beside means you have to look at these words. Beside होता है by the side of, and if we look at besides होता है with the exception of, इसके अलावा। besides का मतलब आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। और बिसाइड होता है अगर साथ में अगर कोई बैठा हो हम उसके लिए यूज करते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। And there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. So now just look at the beauty of this particular sentence. इसके अलावा पॉसिबिलिटी होता है जिसमें शायद अटका होता है, जिसमें आई थिंक परहैप्स अटका होता है। ये भी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा जा सकता था कुछ हद तक कि इवेंस जो था कीनली इंटरेस्टेड था स्टडीज में, उस पेपर को पास करने के लिए, उस एग्जाम को पास करने के लिए, ओ लेवल जर्मन एग्जाम को। तो इस पॉइंट को सोचते हुए गवर्नर वाज थिंकिंग वेरी पॉजिटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी फर्स्ट पॉइंट तो गवर्नर वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो, और अगर टॉप अथॉरिटी जो केयर कर रही थी उसके भागने के कोई चांसेस नहीं थे। दूसरा पॉइंट, बिसाइड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अलावा, you must have studied this particular chapter. If we look at the previous page, so we have studied that he was keenly interested in upgrading his education. और अगर उसका रियल सेंस में इंटरेस्ट था ओ लेवल जर्मन एग्जाम को क्लियर करने का, then there was no chance of any negativity. Just a slight possibility. Slight होता है very less. So very less possibility was there. The possibility of his negative action was very less. बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे भी वही रिपीट करेगा जो पहले 3 बार उसने नेगेटिविटी क्रिएट किया है डिफरेंट प्रिजन्स में। जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिपीटेड ट्वाइस। तो बेटा ये जो लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन कब होता है? In order to give value to certain point, in order to give significance to certain point, this literary device is used. तो इसका मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी थी उसकी नेगेटिविटी क्रिएट करने की। नेगेटिविटी क्या था? उसके जो जेल से भागने के चांसेस बहुत कम थे। फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी यू शुड बी एबल टू लुक एट, governor was taking care of. Secondly, if he wanted to just pass his examination, automatically he must be away from his negative actions. क्योंकि एडुकेशन जो होता है एक सी चेंज आता है एडुकेशन के बाद।
हर इंसान में। तो इसका मतलब बहुत कम चांसेस थे कि यहाँ से भी वो जेल को तोड़ के भागेगा। एक सिक्योरिटी टाइट थी, दूसरा अथॉरिटीज खुद ध्यान रख रही थी, गवर्नर खुद टेक केयर कर रहा था, तीसरा वो पढ़ाई का जो इंटरप्रिटेशन उसने दिया, एजुकेशन इज एजुकेशन। आई थिंक these concepts are crystal clear. Just a slight possibility, just a slight possibility. You are crystal clear about literary device repetition. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. Now just look at 8:30 p.m. PM और AM you are able to understand, यानी कि रात के इवनिंग के 8:30, लेट इवनिंग के 8:30 on Monday 7 June, and the day and date was Monday, and date was 7 June. Ivan's tutor, German teacher, was taking tuition at the personal level, but the payment was to be done by jail authorities, prison authorities. तो वो उसका जर्मन टीचर ने उसके साथ हाथ मिलाया, shook him by the hand means उसने शेक हैंड किया in the heavily guarded recreational block. Heavily guarded मतलब जहां पे उसको उसका सेल था, सेल ऑलरेडी अनाउंस यू पीपल, सेल होता है बेटे प्रिजनर्स के लिए, छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं प्रिजन में। तो उसका जो सेल था CELL, वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था जहां पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। हेवीली गार्डेड मींस नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स वर देयर just across from D wing. Across, I have already told you, this is also preposition. So it was just across from D wing. I think you are crystal clear about the location of Ivan's cell, where he was just supposed to appear for his examination. So I think with this particular paragraph is over. There is no doubt so far as this paragraph is concerned. Now look at the next, but in inverted commas. Guten Glück, Herr Evans. Just look at the meaning of Guten Glück. So particularly these are German words. Here it is also German word. It means Mr. Evans you are able to look at. Here his tutor was wishing good luck to him. एग्जामिनेशन से पहले, पेपर से पहले, कल पेपर है सपोज, तो एक दिन पहले रात को he was wishing good luck to that fellow, to Evans. Guten Glück, I have already told, it is German word. These are German words, and Herr means Mr. It is also German word. Pardon. Now just look at the reply of Ivan. He was not able to understand the meaning of Guten Glück because he was not able to learn even the basics of German language. He was wasting his time and energy with a tutor instead of studying. So that is why he was just inquiring कि बताना क्या बोला है आपने, अपने टीचर को, अपने ट्यूटर को वो पूछ रहा है कि सर रिपीट करना क्या बोला है। अगर उसको जर्मन आती होती, he was able to understand the meaning of Guten Glück, यानी कि गुड लक। तो ये पॉइंट जो है वो बेटे क्लैरिफाई करता है कि he was just wasting his time and energy, never wanted to study. He had made the drama of his education of appearing in the examination in order to be away from the jail. वो फोर्थ टाइम भी जेल को तोड़ना चाहता था और भागना चाहता था वहां से। तो ये एक एक्सक्यूज था उसका पेपर का, पेपर देना नहीं चाहता था। अगर एग्जाम उसने अच्छे तरीके से देना होता, पास करना होता, तो उसने पढ़ाई की होती। ट्यूटर के साथ भी वो मिलके गलत, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स
इकट्ठे करता था, यानी कि नेगेटिव पॉइंट जो जेल के लिए थे, प्रिजन के लिए थे, गवर्नर के लिए थे, कि कैसे जेल से बाहर भागना है. So I think you are crystal clear up to this particular point that that fellow had not studied at all, was not able to look at the basics of German language. And you have studied that he was provided with the tutor very early, the month of March. So I think still he was not prepared. The reason behind that was he never wanted to study. I think you are crystal clear about this concept. Now just look at the reply of his tutor, German teacher. I said, good luck for tomorrow. I was repeating the same. कि वैंस जी मैंने कहा है गुड लक कल के लिए, गुड लक कल के एग्जाम के लिए, यानी पेपर से पहले वो अच्छी विश के लिए मैंने कहते विश किया था. तो ओ थैंक्स आई मीन एड देन क्वेश्चन. जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो वो कहता है कि ओ थैंक्स, एक्सप्रेशन शो कर रहा है वैंस यहाँ पे, कहता है थैंक यू, मुझे विश कर रहे हो, अच्छी विश कर रहे हो, गुड विश कर रहे हो मेरे एग्जाम के लिए, थैंक्स फॉर दैट. Er, I have already told you this word is used for Mr. Her or er you are able to look at. I mean er, Dankestan. Dankestan is also German. These are German words. So it means thank you, धन्यवाद जिसको बोलते हैं. So I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt so far as line by line explanation up to this particular point is concerned. You haven't a cat in hell's chance of getting through, of course, but just look at the dialogue of Ivan's tutor. So if we look at this particular phrase, just write the meaning bete. A cat in hell's chance. It means किसी भी चीज के होने की जब उम्मीद नहीं होती. We are able to look at this particular phrase. Well, the chances of any occurrence are totally zero. You have to look at. तो यहाँ पे जो उसके जर्मन ट्यूटर हैं उसको कहना चाह रहे हैं कि बेटा एक बात सुन ले कि वहां कोई चीटिंग का चांस नहीं मिलने वाला. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू. यानी कि यहाँ इस एक तो पेपर की चीटिंग की बात की जा रही है, यानी मेन सिग्नल जो यहाँ पे किया जा रहा है इस पॉइंट की तरफ किया जा रहा है कि बेटा भागने का 1% भी चांस नहीं होगा, क्योंकि वहां अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांगली किया गया है. बट अगेन ही वाज जस्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वर्ड बट, लेकिन क्योंकि उसको बिगाड़ने में, यानी बिगड़ा हुआ तो इवेंट से पहले ही था, और ट्यूटर भी जो था वो प्लान आउट कर रहा था कि कैसे सक्सेसफुली तुझे जेल को ब्रेक करके वहां से भागना है, प्रिजन का डोर तोड़ के कैसे निकलना है. I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt. So now look at the next. I may surprise everybody, said Evans. Just look at the positive response of Evans. He was highlighting that particular point that he might surprise everybody. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि वो अपनी कलाकारी से, अपनी चालाकी से, अपनी shrewdness से, अपनी cleverness से सबको हैरान भी कर सकता है. हैरान, I think you are able to look at surprise. May this you are able to look at this particular model again. May possibility के लिए यूज होता है. तो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है कि हाँ वो अपनी चालाकी से, अपनी आई थिंक क्लेवरनेस से सबको हैरान भी कर सकता है. यानी हैरानी किस बात की, यानी वो एक सिग्नल दे रहा है, एक सिंबल दे रहा है कि वो जेल को तोड़ के भी भाग सकता है. तो ये नहीं कि चाहे कितना भी टाइट सिक्योरिटी हो, he wanted to highlight that particular point that he was expert in doing negativity of breaking jail. यानी कि वो उसके लिए तो पॉजिटिविटी थी, वो नेगेटिविटी तो जेल अथॉरिटीज के लिए थी. I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that.
Now look at the next students. At 8:30, the following morning, Evans had a visitor. So just look at uh, the next. Next is at 8:30 morning, यानी on 8th June. We had studied about 7th June, जबकि 8:30 रात को उसके ट्यूटर ने उसको गुड लक बोला था. Now date is 8th June. It is Tuesday. And the time is 8:30. The following morning होता the next morning. Evans had a visitor. तो इवेंस के पास एक विजिटर आया, यानी कि इवेंस के सेल में इवेंस को कोई मिलने आया. टू विजिटर्स इनफैक्ट, नहीं, एक नहीं दो. इनफैक्ट का मतलब इन रियलिटी टू विजिटर्स वर देयर. दो लोग जो थे उसके प्रिजन में, उसके सेल में जहां वो बैठा था, उसको मिलने आए. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk. Just look at the action of events here. He tucked his grubby string vest. Just write down the meaning of this word grubby. It means dirty, मैला, खराब, गंदा, जिसको बोला जाता है. टक्ड होता है अंदर करना. His grubby string vest, जो उसकी वेस्ट होती है बनियान, तो उसने जो अपनी गंदी सी बनियान पहन रखी थी वो उसने टक इन किया. He had tucked it into his equally grubby trousers. तो उसकी ट्राउजर्स थी, जो पैंट पहन रखी थी उसने, वो भी बड़ी गंदी सी पहन रखी थी, मैली, फटी पुरानी. तो उसके अंदर, पैंट के अंदर उसने उस बनियान को कर लिया. हम आपको कहते हैं ना टक योर शर्ट इन, यानी यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर वर्ड टक्ड. इनटू क्यों यूज किया गया है इनकी जगह? बिकॉज this particular action was done at that particular moment. He was instructed for that particular instruction. He was instructed for that particular action, and he had done that particular action immediately while he had observed two visitors in his cell. Just look at the things. And stood up from his bunk. तो bunk क्या होता है? पहले इसका मीनिंग लिखिए, शेल्फ. छोटे छोटे बेंच होते हैं, बेसिकली प्रिजन में होते हैं, प्रिजन सेल्स में होते हैं. तो वहां पे बैठा हुआ था वो. वहां से वो खड़ा हुआ, स्माइलिंग चेयरफुली. ही वाज स्माइलिंग हैप्पीली. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर. जस्ट विशिंग गुड मॉर्निंग टू मिस्टर जैक्सन. क्योंकि जो एक विजिटर था वो मिस्टर जैक्सन था. ही वाज प्रिजन ऑफिसर. In an introductory part, we have just studied about this fellow, that is Mr. Jackson. This is indeed an honor. Here Evans wanted to highlight that particular point, that it is really a core level of respect. कि आप मेरे सेल में आए, very big thing. It's a big respect. It's a big honor. I think you are crystal clear so far as this paragraph is concerned. There is no doubt in this. You might have written the meaning of grubby, dirty. So if we look at bunk, it is just shelf, जो छोटा सा bench होता है ना बैठने के लिए. Jails में होता है, prisons में होता है. I have already told you people. So now look at the next step. Now just look at the next paragraph. Jackson was the senior prison officer on D wing. If we look at the designation of this fellow, that is Mr. Jackson, he was the senior prison officer on D wing, and he and Evans had already become warm enemies. So now just look at this particular sentence in a very different way. So he and Evans, he means Jackson and Evans, had already become warm enemies. They had become warm enemies of each other. Now understand the meaning of warm enemies. Enemy, I think you are able to understand.
warm होता है, they never want to tolerate each other. यानी कि जो जैक्सन थे उसको उनको इवेंट्स की हरकतों के बारे में जानकारी पहले ही थी और उनके एक्शंस के बाद और हो चुकी थी। तो जो अब ये वर्ड्स चूज किए गए हैं, सो दैट इज व्हाई दे हैड बिकम वार्म एनिमीज। हाँ, वार्म एनिमी क्या होता है बेटे, बात भी करते हैं लेकिन कंट्रोवर्शियल इश्यूज ज्यादा होते हैं हर बात। Now look at the next sentence of the same paragraph. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man only recently recruited to the profession. At Jackson's side, just look at this particular meaning. यानी जैक्सन की साइड में ऑफिसर खड़ा था दूसरा, उनके नाम क्या था, स्टीफेंस। He was a newly appointed officer. So already, if we look at previous paragraph, you have studied two visitors. One visitor was Jackson and second visitor was Stephens. तो जो स्टीफेंस थे वो जैक्सन के साथ खड़े थे, जैक्सन के बिल्कुल पास खड़े थे। A burly, surly looking man. Just look at the meaning of a burly. Look at the meaning. Burly means जिसको कहते हैं हट्टा कट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो थोड़ा हैवी होता है, जिसकी फिजिक थोड़ी हैवी होती है। तो जिसे एग्जांपल दूं, खली। आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इफ आई विल हाईलाइट द एग्जांपल। तो सर्ली, जस्ट लुक एट द मीनिंग। सर्ली होता है द पर्सन whose face expressions are arrogant. इसको हिंदी में कहूँ कि जो मुंह सा बना के बैठे रहना, मुंह मतलब हैप्पीनेस नहीं शो होती, जिससे लगता है कि बहुत गंदी सी शक्ल बनाई हुई है, यानी एरोगेंट एटीट्यूड शो कर रहा है, हो रहा, वो जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन एरोगेंट एटीट्यूड शो कर रहा होता है, लुकिंग मैन। तो जैक्सन, जस्ट लुक एट द थिंग्स एट जैक्सन साइड, जैक्सन के साइड पे एक ऑफिसर खड़ा था, स्टीफेन। I think you will be able to understand the things and rectify the things immediately. तो आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, जैक्सन की साइड पे, यानी दो लोग इकट्ठे आए थे ना, जैक्सन और स्टीफेंस। तो जैक्सन और स्टीफेंस जो थे दोनों साथ साथ खड़े थे। स्टीफेन की आउटलुक बताई गई है, ही वाज हैवी, यानी कि जस्ट लाइक खली, और एक एरोगेंट एटीट्यूड वाला इंसान लगता था कि उसका बिहेवियर जो है काफी एरोगेंट है, क्योंकि सरली लुक थी उसकी। सरली लुक, ऑलरेडी मैंने कहा ना कि जब इंसान के फेस एक्सप्रेशंस बताते हैं है कि इसका जो एटीट्यूड है बहुत एरोगेंट है, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। तो उसकी जो पोस्टिंग हुई थी, अभी हुई थी, ही वाज वेरी न्यू टू हिज प्रोफेशन, और वो अभी अभी ज्वाइन किया था उसने ऑक्सफोर्ड प्रिजन, सो अपॉइंटेड रिसेंटली। I think crystal clear about this particular paragraph. There is no doubt in that. Now look at the next. Jackson noted curtly, and how is our little Einstein this morning? Then just look at this particular sentence spoken by Jackson. Jackson nodded curtly. I have already told you many times, nod means to just uh, मूव आवर हेड। अपनी मूवमेंट होती है हेड की, यस के लिए जैसे हम यस का जेस्चर दिखाते हैं, नो के लिए नो का दिखाते हैं। तो वो उसने नोट किया ना, वेरी इफेक्टिव वे। एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टाइन, साथ में क्या बोला, क्या क्वेश्चन पूछा कि कैसा है हमारा छोटा सा आइंस्टाइन। ये एक आयरनी है, दिस मॉर्निंग दिन, कि कैसा है हमारा बेटा आज आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, इफ वी लुक एट आइंस्टाइन, इज अ वेरी फाइन साइंटिस्ट। अब वो उसके साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक आयरन ही है। ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। जब हम एक तरह से तानाकशी कहते हैं इसको हिंदी में, कि जो जो नहीं होता उसके साथ उसको उसको जोड़ देते हैं। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देयर इज नो डाउट।
अब इवेंट्स भी कम नहीं था. जस्ट लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ इवेंट्स इन द नेक्स्ट सेंटेंस, again in inverted commas. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? तो ये apostrophe और e, it is shortened form of he. तो लेकिन बेटे आपने एग्जाम में यूज नहीं करना. You possess no right to use this particular shortened form while you attempt your paper or even while you write your notes. You have to look at. So he, a mathematician, Mr. Jackson, now he wanted to make a query in a very funny way. यहाँ पे आइंस्टाइन बहुत, यानी यहाँ इवेंट्स बड़ी फनी वे से पूछ रहा है कि क्या वो मैथमेटिशियन नहीं था जैक्सन जी. Again Evans was speaking. I think he was a Jew, Mr. Jackson. He was adding, just look at next dialogue of Evans. यानी he was responding to the previous query of जैक्सन. जब उन्होंने कहा था कि हमारा आइंस्टाइन कैसा है, अब वो इस कॉन्सेप्ट को समझना, वो प्रूफ दे रहा है कि मैं आइंस्टाइन नहीं हूं. पहला क्वेश्चन तो वो इस तरीके से क्वेरी कर रहा है कि वो मैथमेटिशियन था. He wanted to highlight, यानी कि Evans wanted to highlight that particular point that he was not a mathematician, कि मैं मैथमेटिशियन नहीं. सेकेंड पॉइंट पे वो हाईलाइट कर रहा है कि he was a Jew. Jew किसको कहते हैं बेटा? एक रिलीजन होता है, एक कल्चर होता है. अब कहते हैं कि जैक्सन जी मैं ज्यू भी नहीं हूँ. ज्यू, यू आर एबल टू